Surve was undoubtedly one of the most beautiful places we stayed at. It was peaceful, calm, quiet, and magical. The untouched beach, the never ending ocean, and the brilliantly colored sunrise made me think how beautiful this world is and how little I have seen it yet. Though we were tired from cycling for 2 days straight, I still wanted to get up and meet every single road on the way, every rising sun of the day, every passing experience, and say, hey, I'm glad that I met you, that I am here, and that I'm not doing something for someone for something that's not even real. Surve Beach gave us the much needed reason, a motivation to carry on the rest of the journey. There is no one on the beach. I am the king. I am the king of this beach. Of this beach. Of this entire. He's the king of this beach. Entire island. Entire island. He's the bitch. Sorry, he's the king of the beach. वो सही है. गांव का नाम है आद गांव, जो कि सरवा गांव से नेक्स्ट है. थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, उसके बाद में यू विल गेट आद गांव. नमस्ते अंकल. I wonder how this night will be. The apple does not fall from the tree. अच्छा करेंगे और जल्दी पहुंचेंगे, और ये वहाँ से रास्ता खराब है और लेट भी पहुंच जाएंगे. थैंक यू. ठीक है, रास्ता बहुत खराब है. आपको प्रॉब्लम नहीं, दूसरा कुछ नहीं. जाके आप जितना इजी लग रहा तो उतना इजी है नहीं है. उतार चढ़ाव वो भी चलो ठीक है, मैनेज हो जाएगा, पर धूप बहुत है. इट्स वेरी टफ टू साइकिल ड्यूरिंग आफ्टरनून. आज दापोली. उद्या गणपतीपुळे आहे. उद्या गणपति में पहुंचा. हमारे लेजेंड अभी पहुंचे जस्ट पहुंचे. अल्ट्रा लेजेंड. सॉरी स्टैंड लगाते हुए स्टैंड लगा चुके हैं. चलते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं. एटीट्यूड. चश्मा हमारा पहना हुआ है, और चश्मा उतार दिया. अभी टिकट निकालेंगे. पता नहीं. ओह, क्या टर्न मारा है लेजेंड ने, क्या टर्न मारा है. कैसा था रास्ता? बहुत सही था. अभी हम लोग बाग मांडले से वेसवी तक की फेरी ले रहे हैं. थैंक यू.